Hello friends, welcome to the video lecture series on the psychological testing in the services selection board interview. आपको पता है this is the SSB interview flow chart. Once you clear the stage 1, you go through the stage 2, which consists of the psychological test, which is normally conducted on the day 2. And it consists of TAT, WAT, SRT and self-description. We also understand that SSB is a personality-based selection and psychological test, GTO and interview are the testing tools. And in this video lecture series, we will primarily focus on the psychological testing, which is also called MANSA, and it employs a technique called projective technique. So assessment of personality through projective technique. Let's get some basic clear. Psychological assessment in context of the armed forces. This involves a systematic observation of candidates' behavior under specified conditions and in relation to specific stimuli. क्या मतलब है? जो SSB का साइकोलॉजिकल असेसमेंट है आर्म फोर्सेस के लिए, इसमें कैंडिडेट को स्टिमुलेट किया जाता है अलग अलग टेस्टिंग टूल्स को यूज़ करके या अलग अलग साइकोलॉजिकल टेस्ट बैटरीज को यूज़ करके, जैसे TAT, WAT, SRT. इनको देख के आपके ब्रेन को स्टिमुलेट किया जाता है और स्टिमुलेट करके आपके रिस्पॉन्स में आपके जो कैरेक्टर्स है उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जाता है. सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन ऑफ कैंडिडेट्स बिहेवियर थ्रू द हीरो और द कैरेक्टर्स ही हैज क्रिएटेड इन द टेस्ट रिस्पॉन्सेस और WAT एंड SRT पे जो भी करता है. तो कैसे? इट इन्वॉल्व्स अ सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन ऑफ कैंडिडेट्स बिहेवियर थ्रू हिज रिटन रिस्पॉन्स. आपके रेस्पॉन्स को देख के, आपके कैरेक्टर्स के बिहेवियर को देख के आपकी सोच को समझा जाता है. एंड इन रिलेशन टू द स्पेसिफिक स्टिमुलाई. क्या मतलब है? जो स्टिमुलस आपको दिया था उनके एलिमेंट्स को कैसे आप परसीव करते हो, कैसे आप प्रोसेस करते हो, इसकी स्टडी है. नेक्स्ट इज the psychologist in the SSB. He attempts to understand the effects of various components of a situation that is presented to the candidate, and his behavior or his response to those stimuli is studied. पिक्चर में कोई इमोशन है, कोई एक्सीडेंट है, कोई थ्रेट है, कोई रिस्क वाला सिचुएशन है. हाउ डू यू रेस्पॉन्ड टू दीज वेरियस कंपोनेंट्स प्रेजेंटेड टू यू इन द स्टिमुलस, और वो तुम्हारे अंदर क्या इंटरनल प्रोसेस क्रिएट कर रहा है जिसका रेस्पॉन्स लिखित रूप में बाहर आता है. सो साइकोलॉजिस्ट अटेम्प्ट्स टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट्स ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स of the situation presented to the candidates on the candidate's behavior that he manifests through the behavior of the पेपर कैरेक्टर. तो कागज का जो कैरेक्टर है वो आपकी रचना है और आपकी सोच उस रचने का रचयिता है, और रचना में रचयिता के गुण दिखते हैं. दैट्स वाई इनडायरेक्टली वो आपकी मानसा की क्वालिटी को चेक कर रहे हैं बाय लुकिंग एट द बिहेवियर पैटर्न रिफ्लेक्टेड बाय द पेपर कैरेक्टर्स, बिकॉज पेपर कैरेक्टर का जो सोच है वो सोच कैंडिडेट सोच रहा है. सो पेपर कैरेक्टर अच्छा करेगा तो आप अच्छे, वो गड़बड़ करेगा वो भी आपके ऊपर है ना. और ये करने का पर्पस क्या है? विद द पर्पस और इंटेंट टू सेलेक्ट पोटेंशियल कैंडिडेट्स. तो ये पूरा किस लिए कर रहे हैं? पोटेंशियल मिलिट्री ऑफिसर्स बनने के लिए कैंडिडेट पोटेंशियल ढूंढ रहे हैं, ऑफिसर नहीं ढूंढ रहे. ऑफिसर बनने की योग्यता रखने वाले लड़के लड़कियों को ढूंढ रहे हैं ताकि फ्यूचर में ट्रेनिंग के बाद they become officers in the Indian Armed Forces. and कैसे? who crosses the bottom line. एक threshold line है, उस लाइन को ऊपर आना चाहिए, and that line is laid down by the average officer concept. तो आप लोगों ने ये टर्म सुना होगा, एवरेज ऑफिसर. सो SSB का साइकोलॉजिकल टेस्ट में कैंडिडेट के बिहेवियर को अंडर वेरियस स्टिमुलेंट्स के उसमें ऑब्जर्व किया जाता है विद द इंटेंशन टू सेलेक्ट पोटेंशियल ऑफिसर्स फॉर द इंडियन आर्म फोर्सेस. एंड इफ यू मीट द डेटम लाइन ऑफ
the concept of average officer, you will be cleared, otherwise you will not be cleared. Let's see what is average officer. The concept of average officer is described through the presence of certain qualities in the candidate which is known as officer like quality. क्या मतलब है? एवरेज ऑफिसर को कैसे डिफाइन किया हुआ है कि आपके साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस में जो आपका बिहेवियर पैटर्न उभर के आ रहा है, उन उभर के आने वाले कैरेक्टर्स में वी आर लुकिंग फॉर सर्टेन क्वालिटीज. उन क्वालिटी को एसएसबी में बोलते हैं ऑफिसर लाइक क्वालिटी, बट देयर इज नथिंग लाइक ऑफिसर लाइक. दे आर जीवन के गुण है. अगर वो गुण आपके बिहेवियर में प्रेजेंस है, दैट मीन्स यू आर फिटिंग इनटू द प्रोफाइल ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज ऑफिसर एंड यू आर डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट पोटेंशियल. अगर वो नहीं है तो आप में वो गुण नहीं है. तो इट इज अ इनडायरेक्ट वे ऑफ टेस्टिंग योर पर्सनैलिटी बाय एनालाइजिंग दिस पेपर रिस्पॉन्स जो आप लिखित में देते हो, और उसके बिहेवियर पैटर्न को देख के आपके गुण को देखा जाता है. सो ये है वो 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटी विच आर ग्रुप्ड अंडर 4 factors: factor planning and organization, factor social effectiveness, social adjustment, third is factor social effectiveness, and fourth is dynamic. And then these all cues have been generated based on job analysis. और ये job analysis कौन करता है? ये DIPR करता है. मतलब फौज, आर्म फोर्सेस का एक जॉब रिक्वायरमेंट है, और उस जॉब रिक्वायरमेंट का एनालिसिस करके इन क्वालिटीज़ को उन्होंने डिफाइन किया हुआ. पहले ये 29 था, अभी रिड्यूस करके 15 हो गया. इट्स नॉट अबाउट 15 है 29, इट्स अबाउट डू यू हैव दैट मिलिट्री एप्टीट्यूड. अगर एसएसबी पेड़ में चढ़ने वाले जानवरों को ढूंढ रहा है और आप बहुत बढ़िया घोड़े हो या बहुत बढ़िया कुत्ते हो, कितना भी मेहनत कर लो आप पेड़ नहीं चढ़ पाओगे, बिकॉज आपके अंदर मिलिट्री एप्टीट्यूड नहीं है. उन्हें पेड़ चढ़ने वाला चाहिए. सो देयर इज नो पॉइंट taking a good horse for climbing tree, then you will be a mismatch for the job profile. So job profile को देख के, जॉब एनालाइज करके ये क्वालिटीज को किया है, तो इसको एक्टिंग से नहीं कर सकते. yes, you can check whether you have it in or, and then you can develop it. So that's about क्या बोलते हैं, officer like quality and the job analysis which is done by Defense Institute of Psychological Research. Now let's come to the psychological test specific in SSB. इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं before we get into the actual lecture series. First of all, you have to understand कि psychological test में all of you are sitting in this hall. There may be 100 students, but you are not interacting with each other. So it is a non-interactive and non-intervention test. ना आप दूसरे कैंडिडेट से बात कर सकते हो, ना आप साइकोलॉजिस्ट से बात कर सकते हो. That's why it is called testing the static pattern of your behavior. Next is the technique employed is projective technique. The technique employed is projective technique. Projective technique के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो लेक्चर सीरीज में अवेलेबल है बेसिक्स में, तो आप उसमें देख सकते हो, और इसके नीचे भी मैं उसको एम्बेड कर दूंगा सो दैट यू कैन, इसके नीचे भी लिंक कर दूंगा सो दैट यू कैन गो थ्रू दैट कि व्हाट इज प्रोजेक्टिव टेक्निक. Whatever is inside you will get projected. जिस तरह से एक लैपटॉप को if you connect with a projector, the projector is only a medium to project whatever data exists in the laptop. अगर if you want to see a movie, the projector may be good, but the movie cannot be played unless it is there in the laptop first. तो लैपटॉप में अगर गंदा मूवी है तो प्रोजेक्टर अच्छा होने से भी गंदा मूवी प्रोजेक्ट हो जाएगा. डू यू हैव इट इन यू? वॉट एवर इज इन यू, इट विल गेट प्रोजेक्टेड. दैट्स व्हाई दिस टेक्निक इज कॉल्ड प्रोजेक्टिव टेक्निक. वॉच द वीडियो प्रोजेक्टिव टेक्निक. इट इज नॉन इंटरैक्टिव एंड नॉन इंटरवेंशन टेस्ट. व्हाट डज इट मीन? Neither the candidates interact with the candidates who is sitting next to him because you're forbidden, you're told not to discuss. Neither you can speak to the psychologist during the course of the test or after the test. After the test, the psychologist does not have the liberty of calling you back and checking with you कि भैया ये आपने क्या लिखा जरा समझाओ. He cannot do that. So it is non-interactive and non-intervention test. That means it is your responsibility to write your responses in such a manner that you bring absolute clarity in the mind of the psychologist, because he or she does not have the liberty of taking clarification from you, unlike in the interview where he has the full liberty to do that. Next is, it is individual being tested in isolation. So that's why it is testing the static pattern of your behavior. ऊपर लिखा है psychological test is
टेस्टिंग द स्टैटिक पैटर्न ऑफ योर बिहेवियर का मतलब क्या है, एक्सटर्नली आप में कुछ बदलाव नहीं हो रहा, सिर्फ आपको टीएटी का पिक्चर स्टिमुलस दिखाया जा रहा है. वॉट एवर इज हैपनिंग, वॉट लेड टू द सिचुएशन, वॉट इज करंटली हैपनिंग, वॉट इज द फाइनल आउटकम, WAT का एसोसिएशन, सिचुएशन रिएक्शन रिस्पॉन्स, एवरीथिंग इज हैपनिंग within you, whereas in case of GTO, others are affecting you, others behavior, group dynamics comes. Here there is no group dynamics from the outside. Yes, there is dynamic within the characters on the paper, but that's happening within you, not outside you. So it is testing the static pattern of behavior of the candidate, whereas GTO mein it is testing the dynamic pattern. So that's a big difference. Here the individual is tested in isolation, whereas in case of GTO, there also it is individual being tested but in context of a group. ये difference समझना पड़ेगा. Next is purely आपका जो internal communication gets expressed, that's why it's called mansa. इसका मतलब क्या है, since there is no external input, everything that you write, it is your responsibility to bring clarity because it is 100% your thinking. There is no external thinking added to it. So 100% आपकी मानसा जो है पेन से लिखा जाएगा. इसका मतलब है you as the writer has the complete control on what's happening within you, internal communication, and that gets manifested in the external communication. That's why it's called mansa. Next is others' presence do not have any effect on any of the candidate. You may be good, you may be bad. आपका English कमजोर है, GTO में it affects, PP&DT में it affects, interview में at least the interviewing officer is interactive. It affects because he cross questions. In the psychological test, खुली छूट है. It's a test of your imagination. So it is very that way. It gives you wide freedom of choice to express yourself because others' presence don't affect. Jo likhna likho, but you're responsible. So that way, that's the characteristic of projective technique and the psychological test in SSB. Now, let's see something more about the psychological tests in the SSB. Psychological testing tools. What is the tools doing? To test your personality, which you have to develop before going for the SSB interview. And these tools are called the Mansa tool because it is testing the static pattern of personality and others don't have any influence. Now, the first test is 12 into TAT pictures. So we will get into all those details baad mein. The last one is a blank one. Thereafter, you're presented with 60 WAT and 60 SRT and the self description in the same order. We will get into each of these tests in detail in the subsequent video series, but for this time being, psychological test is conducted on the second day and you are presented with 12 TAT, 60 WAT, 60 SRT and SD, which you have to write in 15 minutes. The details of these tests we will discuss further. Let's see the weightage, assessment weightage. And as the psychologist does the assessment weightage is for TAT, it is almost 70% and it forms the basic test. आपका basic character यहाँ से निकल जाता है. We will see why so much of weightage for TAT. Rest all WAT, SRT and the SD, they form part of the confirmatory test and the weightage is approximately 10, 10, 10. So total 100%. What you have to observe is the TAT alone has got 70% weightage. So that's a test that needs to be taken care of. So what led to the situation, what is currently happening, what is final outcome, whatever you write, understand it is 70% of your assessment is already done in the first 12 TAT pictures and rest WAT, SRT and SD are simply confirmatory tests. So there is a concept called claimed value, demonstrated value and expected value. So you will find it in the future lecture series. So kindly watch that. Claimed value is what you claim through your SD and SRT. Demonstrated value is what you demonstrate in your PIQ, that's based on life achievements, and the TAT, which is actual problem solving. And what is expected? जो SSB को चाहिए average officer profile का based on the 15 officer like quality. Claimed value, demonstrated value and expected value. Please put it in your comment box. What have you understood through these three terms? We'll discuss it further. अगर आपका TAT उल्टा पड़ गया, your game is over. So we will see all that in the subsequent lecture series. Now I want to ask you एक सवाल, and the सवाल is, all of us have given academic tests. You are given 10th का exam, 12th का exam, graduation, engineering, MBA, a lot of things you have done.
and you are also this time put through psychological tests. In academic test also you sit and write something, in psychological tests also you sit and write. In academic test you are able to score 90-95%. What is the problem that in psychological test you are not able to score even 40%, that is 90 out of 225, that's a mark that each one of them have, psychologist G20 interview. Why even 40% is not being scored? What is the fundamental difference between academic test and psychological test? ये जरूर आप comment box में लिखना. In fact, I'll make a video of this in the subsequent slides. You will get to know that, and hope this video lecture series will bring a lot of clarity, in fact 500% clarity in terms of understanding the psychological test, the test requirement, and the gaps where you have to work on yourself, and in the process bring a lot of clarity and efficiency in your performance. Thank you, and may God bless you.